लेग एंड फुट। ठीक है जी। तो कंबाइंड अपर एंड लोअर लिम्ब के लिए जो टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, स्टाइलोपॉड दैट इज ह्यूमरस फॉर द अपर लिम्ब एंड द फीमर इन द लोअर लिम्ब। Zeugopoid, these are the collective name for radius and ulna in upper limb and tibia and fibula for the lower limb. और ऑटोपॉड का अगर जिक्र आएगा या कहीं पर टाइम लिखी होगी, सो दैट वुड मीन wrist and fingers for the upper limb and ankle joint and the toes for the lower limb. So ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं जो बार बार आगे इस्तेमाल होंगी। अच्छा जी, अगर हम अब डायग्राम से देखना शुरू कर दें, the ultrasonographic yes black and white image, ये central thickening जो बन रही है, this is the pointed apex of the developing limb. ठीक है, this is the apical ectodermal ridge. Initially एक continuous band या margin बनता है for the complete region of the limb, लेकिन जब आगे हैंड प्लेट और फुट प्लेट की डिमार्केशन हो जाती है तो वहाँ पे फिंगर्स के लिए 5 हमें चाहिए, टोज के लिए भी और फिंगर्स के लिए भी 5 स्पॉट्स चाहिए, बाकी पे एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो दीज पॉइंटेड एरियाज रिप्रेजेंटेड बाय एरोज एंड डॉट्स रिप्रेजेंट द लेटर फेट ऑफ द एपिकल एक्टोडर्मल रिज। ठीक है, और ये 5 एरियाज में जब से अब रह जाएगी डेवलपमेंट एरियाज, तो ये 5 डिजिट बना देंगे। अच्छा जी, फिर हमने बात की थी अभी एपिकल एक्टोडर्मल रिज की कि वो दिस इज द डिस्टल मोस्ट एरिया थिकेंड डिराइव फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म। ठीक है, जो कि एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि जिसमें लिम्स ने डेवलप होना है। ठीक है जी, उसके बिल्कुल नीचे अगर हम देखेंगे कि इसकी कंस्टिट्यूशन क्या है, कि these upper and lower limb birds जो पहले prominent होती हैं, produce होती हैं, they are covered by the surface ectoderm and with the central core of somatic mesoderm या mesenchyme. ठीक है, तो फिर ये zone of proliferation है that is just below the apical ectodermal ridge. यहाँ पे जब mesenchymal cells हैं ये rapidly divide होते जाएंगे, proliferate होते जाएंगे to increase the size and the structure of the limbs. ठीक है, फिर अगर हम इनिशियली देखते हैं कि अगर एक राउंडेड बल्ज बना है कि जिससे बहुत सारी चीज़ें डिटरमिन होनी है कि प्रॉक्सिमल टू डिस्टल अरेंजमेंट क्या होगी लिम्ब की। ठीक है कि जी, टूवर्ड्स द शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट कौन से स्ट्रक्चर आएंगे और टूवर्ड्स द हैंड के क्या चीज़ बनेगी। फिर इसके बाद डॉर्सल और वेंट्रल साइड को डिटरमिन करना है कि जी कौन सी चीज़ डॉर्सल साइड पे आएगी, कौन सी वेंट्रल पे आएगी। तो ये सारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं जो कि कंट्रोल्ड ग्रोथ में आएंगे, अदरवाइज डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो जस्ट ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट of apical ectodermal ridge and zone of proliferation, there are the specialized cells which function as a zone of polarizing activity, ZPA abbreviation हमने इसकी बात की थी। अब ये dorsal और ventral aspect of the limb को determine करेगा। ठीक है जी, अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे क्या और चीज़ हम देखेंगे कि apical ectodermal ridge से that was derived from the surface ectoderm, उसके अंदर सेंटर में mesenchyme है for the somatic part of the lateral plate mesoderm। ठीक है जी, so primary proximal and distal aspects या areas determine होने हैं। इसके अलावा ZPA से dorsoventral demarcation और differentiation इसकी होनी है कि इसके एंटीरियर साइड पे कौन से मसल्स बनेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, पोस्टीरियरली कौन सा होगा। तो ये सारी चीज़ें आगे हम वन बाय वन इसको देखते जाएंगे, सो इसलिए इनको जिक्र करना ज़रूरी था कि वी गेट द आइडिया कि हम बात कर क्या रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप ज़रूर पूछ लें।
to revise कि upper limb और lower limb buds जो prominent होनी है from that will be from the anterolateral body wall. Covering is by the surface ectoderm, and below it is nation and direction of the limb growth. उसके नीचे जो area just below the apical ectodermal ridge होगा, that will be the mesenchymal cells which are dividing rapidly to increase the size and the structure formation. फिर उसके बाद posterior to the apical ectodermal ridge there are specialized cells that function as the zone of polarizing activity that would determine the during the 6th week and onward when the foot and hand development starts. The apical ectodermal splits into 5 spots or areas for the development of digits for the hand and the toes for the feet. ठीक है, बाकी एरियाज में ये डीजनरेट हो जाएगा एपिकल ectodermal ridge, और जहाँ पे ये डीजनरेट होके गैप बनना शुरू हो जाएगा दैट विल बी द डिजिटल क्लेफ्ट. डिजिटल रेस बन गई, जो फिंगर्स ये टोज डेवलप हो रही हैं उनके दरमियान में जो मेसेनकाइम है मेसोडर्म डीजनरेट किया, दैट विल बी फॉर्मिंग द डिजिटल क्लेफ्ट्स. दीज आर द गैप्स बिटवीन द फिंगर. अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? What is apical ectodermal ridge? Anyone? Roll number 6. आकाश रोज, आप बता दो बच्चा. Okay, what is apical ectodermal ridge? Anyone else? आप में से कोई इसको आंसर कर दे ताकि we move on with the development of the limbs. मैंने ब्रीफ एक जनरल आउटकम या ओवरव्यू लिया है कि जी हम जो टर्म्स इस्तेमाल करेंगे उनका मतलब क्या है. सर एपिडर्मिस का पार्ट जी. thick band of ectoderm that will develop on the limb bud. This is called apical ectodermal ridge. ठीक हो गया. And it is filled up with a core of mesoderm या mesenchyme which is the somatopluric mesoderm. अच्छा जी, उसके बाद आगे हम फिर हमने बात कर दी थी कि जी डिजिटल रेस क्या है, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी क्या है, एक्टिव जोन ऑफ प्रोलिफरेशन क्या है. सो आगे हम थोड़ा सा इसको हम करेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल पे इसके रेगुलेशन में कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे. ठीक है, सबसे पहले होना क्या है कि जी जो एंट्रोलैटरल बॉडी वॉल थी वहां से ये बल्ज होना है, स्पेसिफिक एरिया से सेल्स ने बल्ज करना है टू फॉर्म द अपर लिम्ब बड एंड द लोअर लिम्ब बड. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो इंडक्शन फैक्टर है दैट इज द फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10. अच्छा जी, अब फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TBX5, ये दो जीन्स मिल के
अपर लिम्ब को इंड्यूस करेंगे कि जी लोअर सर्वाइकल रीजन में ये सेल्स प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अपर लिम्ब बड। और अगर हम लोअर लिम्ब बड की बात करते हैं तो वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 along with the transcription factor 4 TBX4 ये दोनों मिलके लोअर लिम्ब को मैनेज करेंगे और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 और TBX5 ये मिलके अपर लिम्ब की रेगुलेशन करेंगे कि जब बनना शुरू होना। ठीक है। And in addition, the retinoic acid that is endogenous present in the body induces or stimulates the limb bud formation. In addition और क्या होगा कि बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स हैं जो इंड्यूस करेंगी एपिकल एक्टोडर्मल रिज को। जब एपिकल एक्टोडर्मल रिज स्टिमुलेट होंगे सेल्स, they will start producing two factors which are fibroblast growth factor 4 and fibroblast growth factor 8। ठीक है जी। FGF10 और TBX5 ने क्या किया था, अपर लिम्ब की इनिशिएशन की थी। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 और TBX4 ने मिलकर लोअर लिम्ब की इंडक्शन स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद रेटिनोइक एसिड ने अपर एंड लोअर लिम्ब बड की इनिशिएशन बिल्कुल शुरू की जो फेज उनको स्टिमुलेट करना है। बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स हैं जो कि इंड्यूस करेंगी सेल्स ऑफ द एपिकल एक्टोडर्मल रिज फॉर प्रोडक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 4 एंड 8। ये दोनों फैक्टर्स जब बनेंगे, they will further stimulate the cells of the mesenchyme or somatic mesoderm to form an area that is the zone of proliferative activity. ये कहाँ पे था? That was just below the ZP is the zone of polarizing activity that is on the dorsal aspect of the near the terminal part of the limb bud. अब जो zone of polarizing activity है, it produces the sonic hedgehog genes जिसने क्या करना है कि अपर लिम्ब पैटर्निंग को मॉनिटर करना है इन द क्रेनियोकॉर्डल एक्सिस कह लें या प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस कह दें कि टुवर्ड्स द ट्रंक कौन से एरियाज या बोन्स बननी है और टुवर्ड्स द डिस्टल पार्ट कौन सी चीज बननी है, दैट इज मॉनिटर्ड और पैटर्न्ड बाय द सोनिक हेजहॉग जीन। क्लियर सो फार? यस सर। अच्छा जी। उसके बाद और क्या होना है, लास्टली जो मॉलिक्यूलर रेगुलेशन है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एनग्रेल 1 और WNT7 जीन्स ये मिलके इसकी डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस को डिटरमिन करेंगे। क्योंकि आप इस डायग्राम में देखते हैं कि WNT7 और एनग्रेल फैक्टर ई सर आपका माइक म्यूट हो गया। अच्छा जी। यहाँ पे आप देखते हैं कि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 ने सरफेस एक्टोडर्म को इंड्यूस किया। उससे क्या बना कि जी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब बड बनना शुरू हो गई थी। फिर हमने बात की थी कि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 10 along with TBX5 अपर लिम्ब बड को स्टिमुलेट करेगा और TBX4 से मिलके लोअर लिम्ब बड को स्टार्ट करेगा। फिर उसके बाद क्या था कि बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स हैं जिन्होंने इंड्यूस किया एपिकल एक्टोडर्मल रिज को और एपिकल एक्टोडर्मल रिज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 4 एंड 8। अब ये दोनोों क्या करेंगे, they will induce the or stimulate the formation of zone of polarizing activity। अब zone of polarizing activity जो है ZPA that determines the dorsal and the ventral aspect of the developing limbs। और इसी तरह जो ट्रांसक्रिप्शन एनग्रेल फैक्टर 1 और WNT7 जीन्स हैं, they determine the dorsal and the ventral aspect of the developing limbs। अच्छा जी, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन करने के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जी लिम्फ डेवलपमेंट होती कैसे है, कब होती है। अच्छा जी। सर जी सर एक कंफ्यूजन है कि
जो सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है सर, ये लगता है जैसे ये सरफेस एक्टोडर्म के भी ऊपर होगी। नहीं, दिस इज बिलो द सरफेस एक्टोडर्म। जो थिकनिंग लेकिन ऑफ सर द जब सरफेस लेकिन सर जब लैटरल प्लेट मेसोडर्म स्प्लिट हुई, एक जैसे प्लांक्नोप्लूरिक जिसने नीचे यॉर्क सैक को कवर कर लिया और एक ने ऊपर जाके जो एम्ब्रियोनिक कैविटी है सर उसको कवर करेगी, तो उसके ऊपर ही आ जाएगी सरफेस के। जो कैविटीज हैं वो तो एक एमनियोटिक कैविटी है, उसका कोई लिंक नहीं है, और जो बाकी थी फेलोएंट डक्ट या yolk sac बन रहा है वो बॉडी कैविटी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो जो बाकी सरफेस बची है उस दैट इज इन्वेडिंग द सरफेस एक्टोडर्म। इसकी वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, सो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, ओके सर। सो हम यहाँ पे बात करते हैं कि द लिम्ब बर्ड्स स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द वेंट्रोलैटरल या एंट्रोलैटरल बॉडी वॉल ड्यूरिंग द 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट। अपर लिम्ब बर्ड पहले अपीयर होती हैं एज अपीयर अर्लियर एज कंपेयर टू द लोअर लिम्ब बर्ड्स। द अपर लिम्ब बर्ड appears around day 24 or 25, ठीक है जी, in the lower cervical region. And regarding the lower limb birds, they appear 2 or 3 days later than the upper limb bird, around day 27, and they will be seen in the lower lumbar region. फिर इसके बाद क्या होगा कि these birds, the composition of these birds is that they are covered by the surface ectoderm, invaded in the center by the core of mesenchyme from the somatopleuric mesoderm. This mesenchymal core or the mesoderm induces a surface ectoderm for multiple layering or stratification of the apical ectodermal ridge, and this area and the area that is just below the apical ectodermal ridge that develop into the zone of proliferative activity where the cells divide and elongate the limb birds by the proliferation of mesenchyme, ठीक है। और एपिकल एक्टोडर्मल रिज ने क्या करना है कि जो cylindrical growth of the limb बन रही है, इसके अंदर जो structures बनने हैं that will be also induced by the mesenchyme, somatic mesenchyme. अगर आप पहले लास्ट लेक्चर को रिकॉल करें एंड कंपेयर इट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलर सिस्टम, हमने ये बात की थी कि जी जितने भी लिम्ब मस्कुलेचर हैं, एंट्रोलैटरल बॉडी वॉल मस्कुलेचर हैं, all of them develop from the which part of myotome? Dorsal or ventral? Ventral part or the epaxial or primaxial, ठीक है। और अभी हम बात कर रहे हैं कि जितनी भी अभी तक mesenchyme की we have talked about the mesenchyme of the limb bud, that is a somatic mesoderm. So this somatic mesoderm will not be involved in the formation or development of the muscles of the limbs. The other structure would be developed but not the musculature. अच्छा जी. So the apical ectodermal ridge produces fibroblast growth factors 4 and 8 mainly, and to some extent factor 2, that induces the development of progress zone that is just below the apical ectodermal ridge. और एक इसमें जो the important thing that you need to recall and remember, the cells are rapidly dividing and proliferating under the apical ectodermal ridge or in the zone of progress zone. The newly formed cells would be added up to the proximal part of the limb and the length of the limb would increase. ये बात क्लियर हुई है कि नहीं? कि हम बात ये कर रहे हैं कि जितने भी नए सेल बनते जाएंगे वो ऑलरेडी फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द लिम्ब में एड अप होते जाएंगे। इसकी मैं आपको एक डायग्राम से इसका यहाँ से आप देख लेंगे कि जितने भी नए सेल बन रहे थे दे वुड बी एडेड अप टू द proximally developed area, ठीक है। कि ये नहीं होगा कि नए सेल बनते जा रहे हैं and they are added up to the apical ectodermal ridge. They would migrate proximally
towards the root of the limbs, upper limb or lower limb, and this area remain having the potential to rapidly divide and proliferate for the further increase and development of the limbs. अच्छा जी, upper limb buds appear हमने कहा कि they appeared in the lower cervical region or lower cranial region because the nervous system head and neck area has started developing early on as compared to the rest of the body. So there will be disproportionately lower as compared to the head of the developing embryo. फिर क्या होगा कि the mesenchymal cells that were added to the root of the limb or the proximal part of the limb start producing the blood vessels, the cartilage, bone model, and the muscles. These muscles are derived from the myotomal cells or mesenchyme of the myotome, not the somatic mesoderm. अगर हम proximal distal development की बात करें, so the limbs are divided into 3 areas. Upper limb में arm, forearm, and hand, and in lower limb there are thigh, leg, and the foot region. And the anterior posterior axis patterning, dorsoventral or intraposterior, that is managed or monitored by the zone of polarizing activity. That was dorsally or ventrally, ZPA. Dorsally, just behind the apical ectodermal ridge. EKG ZP is located on the posterior border of the upper limb bud near the apical ectodermal ridge, and this ZPA region moves distally along with the elongation. अब यहाँ पे ये there are 2 parts to be cleared. The mesenchymal cells from the zone of proliferative activity are added to the proximally formed limbs, but the zone of polarizing activity continues to move distally along with the apical ectodermal ridge. क्या यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये upper limb buds from यहाँ पे, sorry, these are the upper limb buds which are fairly lower enough as compared to the head area. Okay, because central nervous system development has progressed early on before the developing upper limb buds. ठीक है, so जैसे जैसे development ज़्यादा होती जाएगी, so they become proportionate, and the lower limb buds appear in the lumbar segments. अच्छा जी, फिर क्या होगा? As with the further development, the size of the upper limb bud increases as well as the lower limb bud increases. और यहाँ पे आप देखते हैं कि it is more towards the upper part of the developing embryo as compared in the previous diagram. अच्छा जी. Development of the limb bud continues or formation occurs between the 5th to 8th week of development. Okay, 4th week may the limb buds appear during the 4th week, but the demarcation of the 3 parts of the developing limb, hand plate and the foot plate formation, they occur between the 5th to 8th week time period. These 4 weeks are the time period for the development of limbs. How would they occur? The somatic mesoderm in each limb bud destined to form the tendons, ligaments, vasculature, but not the muscles. This is regarding the somatic mesoderm. They will form the tendons, ligaments, and the blood vessels along with the bones, but not the muscles. These muscles develop from the mesenchyme of the myotome, which was the subdivision of somite. Somite divided into 2 parts, the sclerotome and the dermomyotome. With the further development, when the 3 regions are demarcated, upper limb में arm, forearm and hand region, और lower limb में thigh, leg and foot region. So यहाँ पर क्या होगा कि the upper limb buds distal portion appear like
ladder-like appearance for the upper limb, demarcating it from the rest of the upper limb. And these flattened areas are the hand plate and the foot plate. और इनके जहाँ पे ये plates खत्म होंगी, there will be the area of constriction that would be the future demarcation of the wrist joint and the ankle joint. ठीक है जी. उसके बाद hand plate और foot plate prominent होगी. Then another constriction develops that would divide the developing limbs into further two parts, arm and forearm for the upper limb and the thigh and leg for the lower limb by two constrictions. ठीक है जी. अच्छा जी. फिर hand plate में क्या होगा? There was first the continuous apical ectodermal ridge. Initially, there was a continuous apical ectodermal ridge throughout the length of throughout the distal end of the limb bud. When the hand plate and foot plates develop, this apical ectodermal ridge divides into 5 segments only. The area in between them degenerates, forming the digital clefts. When this apoptosis or the programmed cell death is going on, they appear as the web. At this point, when these 5 spots are demarcated but not separated, they appear as a webbed structure. ठीक है जी, इस तरह की जुड़ी हुई चीज नजर आएगी. Later on, when the cell death occurs, the fingers and the toes become separated. So these 5 areas would induce the formation of the digits and the phalanges. The area in between undergoes programmed cell death or apoptosis and later on degenerates so that the digits and the toes become separate. अच्छा जी, वापस हम आ जाए अगर. अच्छा जी. These the primordium of the digits and the toes are the digital rays. Initially, they are connected by the mesenchymal tissue, giving the webbed appearance. When these cells degenerate, the digits and the toes become separate, and that is by the end of the 8th week. So it means that by the end of 8th week, the limbs, upper and the lower limb, appear like that of an adult. The structure has formed, the growth would be pending. Then we talk about the development of the muscles in the limbs. The myotome component of the somites is the source of muscles for the upper limb and the lower limb. We talked about that the myotome component has 2 areas, the hypaxial and the epaxial. The epaxial is the ventrolateral body wall along with the musculature of the limbs. And if you recall that list of structures developing, there were back के 3 muscles से Gratis inferior, rhomboids, and the third one was regarding the upper limb. These 3 muscles, levator scapulae. ठीक है. Regarding the upper limb, these 3 muscles only develop from the epaxial or hypaxial part of the myotome. Wrist musculature of the upper limb and the lower limb develop from the primaxial part of the myotome, epaxial part or the ventral part. ये चीज याद रखने की जरूरत है. During the 4th week, जी दोबारा बता दीजिएगा कि एपेक्सियल और वेंट्रल कौन सा, डोर्सल कौन सा. अच्छा जी, हमने बात की थी कि अगर सोमाइट से आप दोबारा रिकॉल करें रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम, तो हमने कहा था कि सोमाइट इनिशियली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. द वेंट्रल वन वाज सोमेटोमियर फॉर स्केलेटल सिस्टम और डोर्सल वन जो था वो डर्मोमायोटोम था. डर्मोमायोटोम में मायोटोमल कंपोनेंट के 2 हिस्से हुए थे, एक डोर्सल और एक वेंट्रल. द डोर्सल वन वाज hypaxial or epaxial part of the myotome,
और जो आगे की तरफ थे वेंट्रल, दे वर द प्राइम एक्सियल, एपेक्सियल और द वेंट्रल वन। ठीक है, तो एंट्रोलैटरल बॉडी वॉल जितनी बननी है, मस्कुलेचर जितना बनना है लिम्स का, अपर लिम लोअर लिम, वो सारे के सारा इंटीरियर पार्ट ऑफ द मायोडोम से बनना है। और जो डॉर्सल पार्ट है दैट विल बी involved in the formation of the muscles around the back of the spine. अपर लिम में 3 मसल्स जैसे लेवेटस स्कैपुली और द हिप एक्सियल। बाकी सारे के सारे जितने भी मसल्स हैं दे आर डेवलपिंग फ्रॉम प्राइम एक्सियल या एपेक्सियल पार्ट या वेंट्रल पार्ट ऑफ द मायोटोम। अच्छा, अब आप एक Thank you, चीज sir. और अपर लिम या लोअर लिम से याद करें कि हमने जो बात की थी प्लेक्सस फॉर्मेशन की, ब्रेकियल प्लेक्सस की बात की थी और लंबर प्लेक्सस की बात की थी। All of them were formed by the ventral rami of the spinal nerves. ठीक, जो सोमा या वेंट्रल पोर्शन है ये अपनी नर्व को देके आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपर लिम में और लोअर लिम में जितने मसल्स की इनोवेशन आ रही है दैट इज द वेंट्रल रेमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व। डॉर्सल पीछे चले जाएंगे और वेंट्रल जो है प्लेक्सस बनाते हुए ये C5, C6, C7, C8 और T1 और लंबोसेक्रल एरिया ये मिलके प्लेक्सस बनाएंगे और मसल्स को इनोवेट करेंगे। ठीक है जी। सो मसल्स की हमने बात कर दी कि जी जितने भी मसल्स हैं एक्सेप्ट 3 फॉर द अपर लिम, दे आर द लेवेटस स्कैपुली, rhomboids एंड द लेटिसमस डॉर्सी। इसके अलावा जितना भी मस्कुलेचर बनना है दैट इज बाय द वेंट्रल पोर्शन ऑफ द मायोटोम। ठीक है जी। Innovation की हमने बात कर दी कि the nerves start to form during the 5th week of development. The ventral rami of the spinal nerves unite to form the plexus. Brachial plexus for the upper limb and the lumbar plexus for the lower limb. And by the end of the 7th week, जब rotation भी हो चुकी होती है, सारा काम हो गया होता है, the rotation of the limbs. Initially, the limb birds are developing in the central midline. तो इससे क्या होगा कि जो थम्स हैं वो लैटरल चले जाएंगे, पाम ऑफ द हैंड आगे आ जाएगी, डॉर्सम पीछे चली जाएगी, जो मीडियल साइड के मसल्स मस्कुलेचर थे दे बिकम द इंटीरियर और द फ्लेक्सर, और जो पोस्टीरियर साइड पे चले गए दे बिकम द एक्सटेंसर्स। ठीक है, अब लोअर लिम्ब में क्या होना है कि इसी तरह लिम्ब्स तो ऐसे ही हैं बट दे रोटेट 90 डिग्री मीडियली। So that is the rotation of the limbs that occur during the 7th week. 90 degree rotation होती है laterally for the upper limb. एक आपको मैं इसकी एनिमेटेड वीडियो दिखा दूं। अच्छा, ये वीडियो विजिबल है आप सबको? Yes, sir.
जी सर। अब आप इसको देखते जाओ, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा. So this is the animation for the development of the limb buds. Upper limb bud पहले बने, lower limb बाद में. This distal portion is the apical ectodermal ridge. ठीक है. Now here you can see initially that was the hand plate formation, a flat structure. Mesenchyme degenerate कर जाएगी to form a separate digits. ये वेब फॉर्म है. यहाँ पे वो mesenchyme degenerate कर दी और digits अलग-अलग प्रोड्यूस हो गए. This is the positioning of the upper and lower limb. अभी ये position से rotation start होनी है. ठीक है. Then the ventral. और ये उनके जो डर्माटोम है या उनकी इनोवेशन के पैटर्न है वो आप देख लेंगे किस तरह शिट होता है. Okay, so this is an animated video for to see the stages of development and the rotation. इसमें आपको कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है जरूर पूछ लें. नो सर. ओके, सो अब इसको एक दफ़ा अपने कल के लेक्चर के लिए एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लें. ये 3 पेज हैं या 4 पेज हैं. ठीक है. एंड इंशाल्लाह टुमारो we will be studying 2 developmental factors, a development of blood vessels in the limb, and then we will see the anomalies regarding these developmental stages. कि कहाँ कहाँ पे डिफेक्ट आएगा तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा. ओके सर जी. अच्छा, अल्लाह हाफिज.